Are you there? Is there any issue? Can you see it? Can you hear me? Yes, sir. Okay. So we were doing the derivation for pressure of gas kept in the cylinder. So what we did is we had taken the particle and single particle we had taken, its velocity components are Vx, Vy, Vz along the x direction and y direction and z direction. So we considered this phase, this one of the surfaces on which x component will hit and bounce back. Because of that, there will be change of momentum. Because of change of momentum, there will be the force. Because of force, there will be the pressure. Force divided by area is the pressure. तो change of momentum हमने निकाल लिया था surface पर. It was coming 2m into Vx. When any particle bounce back with the same speed, the change of momentum will be double. Single side hitting due to this side hitting, it will be mv. Bouncing back also mv. Both are in opposite direction, therefore are simply added up according to vector law. तो चेंज है, देखो इसमें चेंज में माइनस हो जाता है. देखो वन मोमेंटम इज दिस साइड, वन मोमेंटम इज दिस साइड. चेंज में P2 माइनस P1, तो जो माइनस करना है वो भी पलट जाता है, दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में हो जाती है चेंज में, है ना. चेंज मीन माइनस, तो माइनस माइनस होके अदर वेक्टर विल बी इन्वर्टेड, बोथ द वेक्टर्स विल बी इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर मोमेंटम इज बिकमिंग 2mvx. यहाँ पे देखो हमने निकाला माइनस और ये वाला यहाँ पे P2 माइनस P1, तो डबल हुआ कि नहीं. दैट मच इज ट्रांसफर टू द वॉल. एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाले एंड वॉल्यूम कवर्ड इन टाइम डेल्टा टी. यहाँ पे डेल्टा टी में कितना वॉल्यूम कवर होगा, दैट पार्टिकल ऑल विल हिट दिस सरफेस. तो बट एज आई टोल्ड यू, the 50% particle will be moving in opposite direction. Suppose one particle is going like this, there will be other will be like this, because isometric uniform है. तो इसका component इधर होगा, इसका इधर होगा, तो 50% of the molecule will hit this surface. तो इसलिए हमने half किया था, half into volume covered in delta t time into volume per number of particles per unit volume. Single यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल हैं, एंड दैट उसका 50% आर गोइंग टू हिट हियर इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी. द वॉल्यूम कवर्ड विल बी दिस मच. ये यूनिट वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम कवर्ड है. तो दीज आर द टोटल पार्टिकल्स इन द वॉल्यूम, कंसिडर्ड वॉल्यूम कवर्ड इन डेल्टा टी टाइम. उसकी 50% आर गोइंग टू हिट, 50% विल बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तो वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर. नहीं, सिंगल पार्टिकल की हमने चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला हुआ है, टोटल पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट विल बी गिविंग यू टोटल फॉर द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम. टाइम से डिवाइड कर दिया, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करते तो क्या मिलता है, फोर्स मिलता है. तो फोर्स का रिलेशन मिल गया ये, समटाइम्स विल गेट कैंसल आल्सो. एंड एरिया से डिवाइड किया तो प्रेशर मिलेगा. यहाँ पे इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, ए विल गेट कैंसल, रिमेनिंग टर्म्स विल बी लेफ्ट. तो प्रेशर मिल गया हमें, बट हमने सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी ली है, वेयर एज वी नो all the particles are moving in different velocity, so we have to take the average of that. Average लेना पड़ेगा since all particles are considered. Therefore, replacing Vx square by Vx bar square, यहाँ पे bar मतलब average, which is the average of Vx square. This is the average of Vx square. This was for the single particle. This covers all the particles. ठीक है, तो एवरेज ऑफ वेलोसिटी लेना पड़ेगा. तो नाउ दिस रिलेशन विल बिकम लाइक दिस, m as it is, nv as it is,
and Vx square will be V bar x square, average value, सभी particle का average लेना पड़ेगा. तो this is the pressure. This is the pressure on the one side, shaded side, ये वाले, by the x component, है ना. ठीक है, यहां तक हो गया. Now we are interested in all the three components. ये केवल ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, उसका x component है. But what about other components? We are interested in the velocity of the particle, not the x component of particle. तो कैसे फिर velocity of particle को लाएंगे? Vector law से and uniformity से. Now we are going to replace this also in by the mean square velocity से इसको replace करना है. ठीक है, यहाँ तक okay. This up to this point no problem. What we did, we find out the change of momentum per single particle. Then we found out the total number of particles in the volume of the certain volume, and then we found out the pressure by all the particles in that particular volume, and we average the velocity. तो ये आ गया अपना. ठीक है, pressure by all the particles having the x component hitting the shaded side which we have shown. है, ये वाली साइड को हिट कर रहे हैं. यहाँ तक ओके है. तो how to replace the Vx by mean square velocity? NV क्या है? Number of particles per unit volume. M is the mass of each particle. Vx square is the average value of x component of all the particles. ठीक है, तो now mean square velocity के टर्म्स में लाने के लिए, since gas is isotropic का मतलब क्या होता है? We can say uniform. Uniform का मतलब यहाँ पर ये होगा, isotropic is close to uniform, means it will have the no preferred direction. मतलब ऐसा नहीं कि एक particular direction में उसका attraction, no, it is uniform for all the direction. Whatever the tendency to go this side, same with the tendency to go up, same with the tendency to go along the z-axis or z-axis. ठीक है, तो uniform is isotropic means it has the tendency to move in all the direction uniformly. So that is what is the meaning of isotropic. ठीक है, तो therefore x component, y component and z component का average value will be equal because of uniformity. So all the components, average value of all the components will be equal. So v bar x square will be equal to v bar y square and v bar z square. तो ये component equal होंगे. Therefore they will be 1/3. अगर हम इनको तीनों को ऐड कर दें, 1/3 से डिवाइड कर दें, that will be equal to all these three. तीनों को हमने ऐड कर दिया, 1/3 कर दिया, they will be equal to each of them. तीनों इक्वल है ना. सपोज सबकी वैल्यू, this is 2 and this is also 2, this is also 2, so 2 plus 2 plus 2, 6 divide by 3, 2 आ जाएगा, है ना. तो all added divided by 3 will be equal to each of them. But what is this? This is nothing but a mean square velocity. है ना, कोई पर्टिकुलर वेक्टर के 3 कंपोनेंट करते हैं ना, तो तीनों कंपोनेंट का सम will be giving you the mean square velocity. Maximum 3 component we can do for any vector, 3 rectangular component. तो mean square velocity के ये components है ना. So all 3 added will be giving you mean square velocity, where v is the speed and v bar square is mean squared speed, or mean square velocity also sometimes we call it. No, either you call it mean square speed or mean square velocity. Got it? तो
व्हाट वी गेट इज, यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिला, Vx square is nothing but a 1/3 of V square, which is V bar square, which is mean square speed or mean square velocity. तो Vx उसका 1/3 mean square velocity का 1/3 component है, because gas is uniform isotropic, so Vx will be 1/3 of the whole velocity of the particles, average. ठीक है, तो ये Vx की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. तो what we get is V bar is x square will be 1/3. 1/3 को आगे शिफ्ट कर दिया and V bar square यहाँ पर. Can you see? So this is the final derivation. Where V bar square is the mean square velocity or speed. M is the mass of the molecule of the gas. Nv is N upon V. N is the total number of molecules. V is the volume of the gas. Can you see? N be the total number of molecules. Total number of molecules. V the volume of gas. ठीक है, सारे टर्म समझ में आ गए. तो क्या फाइनली प्रेशर है, 1/3 ऑफ पार्टिकल डेंसिटी. एनवी को हम पार्टिकल डेंसिटी भी बोल सकते हैं. जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा लेट मी मेक इट स्लाइटली बिगर. कैन यू सी नाउ प्रॉपर्ली? तो we can call it this, we can also call it particle density or molecule density. Particle density कर देते हैं because it can be molecule, it can be atoms also. Monatomic gas में it will be atoms, diatomic gas में they will be molecule. Particle density. Got it? So this is the final derivation for the pressure of gas kept in the cylinder. Now, valid for the, this relation is valid for irregular cylinder also. Valid for irregular है ना. It need not to be cubical cylinder ना. किचन सिलेंडर जो है सिलेंड्रिकल, उसके लिए भी वैलिड होगा. और इरेगुलर शेप्ड सिलेंडर, बलून के अंदर अगर गैस भरी है ना, तो उसमें भी वैलिड होगा. ऑफ कोर्स बलून में क्या प्रॉब्लम आती है, एक्सपेंड हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका. तो इट कम्स इन इक्विलिब्रियम विद द आउटसाइड प्रेशर. आउटसाइड 1 एटमॉस्फेयर, तो बलून के अंदर भी 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन. But if we keep the volume constant and provide the heat, pressure will go up. All right. Any difficulty here? Pressure में कौन से terms आ रहे हैं देखो. That mass of the particle matters, mass of the gas matters, single mass of the gas molecular atom matters, mean square velocity matters, NV, that particle density, number of particles matters, total number of particles per unit volume. If we increase the particles number density, pressure will go up. सिलेंडर में आप डबल, एक सिलेंडर है उसके अंदर डबल पार्टिकल्स कर दो तो डेंसिटी विल आल्सो बी डबल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर विल बी डबल. इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मेड डबल, तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा. और अगर आप निकाल देते हैं पार्टिकल्स, प्रेशर विल ड्रॉप. गेटिंग ऑन दैट? व्हाट अबाउट टेम्परेचर?
the temperature, pressure increases or what? Remains constant. Because mean square speed में टेम्परेचर आता है. वी हैव सीन मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला देखा था, उसमें टेम्परेचर था. इट इज नथिंग बट ए आरएमएस स्क्वायर. It is equal to the root mean square velocity also. Square of the root mean velocity. ठीक है, तो this derivation you have to remember for your forthcoming examinations. Anything you want to clarify here? कुछ पूछना है आपको यहाँ पर इस डेरिवेशन के बारे में? यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे ये हमें कैसे हमने इसको रिप्लेस किया मीन सारे पार्टिकल्स को कंसीडर करके. फिर आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ द गैस, ऑल द कंपोनेंट्स विल बी इक्वल विच विल बी वन, सबको हमने ऐड करके 1/3 कर दिया. तो और बट दिस इज नथिंग बट ए मीन स्क्वायर वेलोसिटी. उसी के कंपोनेंट है मीन स्क्वायर वेलोसिटी के एक्स वाई जेड कंपोनेंट है. वेक्टर लॉ से हम बोलते हैं किसी वेक्टर के मैक्सिमम 3 कंपोनेंट कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल, एक्स वाई एंड जी कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट. All right, we move on to the next one. Here we did in the previous class. After that we did from here, we did it today. No response coming. Is there any problem? Am I audible? Yes, sir. Any difficulty? Shall I move on to the next one? Related to this point only. इससे देखते हैं हम. Now इसी से related point है देखो. As I ask you, pressure depends upon the temperature. Yes, that is what is the next point. Kinetic interpretation of temperature. Kinetic interpretation of temperature. यहाँ पे shall I tell you one more point? देखो एक पॉइंट और बता दूं एक्स्ट्रा पॉइंट में. देखो मीन आरएमएस वेलोसिटी क्या होता है? वी आरएमएस इज अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ऐसे डिफाइन किया था हमने. वी आरएमएस इज रूट मीन स्क्वायर. तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट लिया हमने, स्क्वायर कर दो बोथ साइड. तो दिस मीन स्क्वायर स्पीड and square of RMS speed both are equal. So we can place here. Can we place? Yes, we can place it. Are you getting this point? Previous class हमने mean square velocity, root mean square velocity को कैसे define किया था? It is the root of mean square velocity. RMS velocity is root of mean square velocity. This is the mean square velocity. Just let me write again. मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट लिया तो आरएमएस वेलोसिटी बनती है. दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो वी कैन रिप्लेस. यहाँ पे हम वीआरएमएस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? एंड वी कैन प्रूव, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन अपॉन वी लिखेंगे. वी को इधर ले आएंगे, है ना? तो जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वीआरएमएस विल बी कमिंग 3RT अपॉन एम नॉट. यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं. From this relation, we can derive the relation for RMS velocity or RMS speed, and also from this we can derive the relation PV is equal to nRT. ये भी यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन हम इस रिलेशन से प्रूव कर सकते हैं. After putting the value of
RMS स्पीड, तो RMS वेलोसिटी का आई मीन इसको हम RMS वेलोसिटी के आई मीन RMS वेलोसिटी का डेरिवेशन भी कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या थी बाय द वे, डू यू रिमेम्बर? बोथ आर इक्वल 3RT अपॉन m0। तो ये वैल्यू पुट करके आइडियल गैस इक्वेशन भी प्रूव कर सकते हैं। बोथ वी कैन प्रूव इट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस रिलेशन if we need it. ठीक है, this relation you have to remember. Why we did NV? आपकी टेक्स्ट बुक में N सिंबल यूज किया है, but we have used the symbol NV because N is for the number of moles. Moles का सिंबल यूज किया हमने, तो there should not be confusion. We have changed the symbol here, NV, which is total number of gas particle divided by volume. In NCERT book में they have used symbol for mole is mu. Mu is generally not used. N is most commonly used. तो हमने मोल का सिंबल नंबर ऑफ मोल्स का N लिया है और ये चेंज किया है. NV is the number of particles per unit volume. ठीक है. Now इसी से रिलेटेड टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. मतलब when the temperature goes up, kinetic energy goes up. That is the meaning. So that's what we are going to prove in this kinetic interpretation of temperature. When the temperature of gas increases, its kinetic energy of all the gas molecules will increase. That's what we are going to prove. Our kinetic energy, average kinetic energy is directly proportional to temperature of the gas. That's what we are going to prove in this topic. So using this relation, we can do it very easily. तो देखो हमने ये अभी प्रूव किया. Okay, what is the meaning of this? Kinetic energy of gas molecules depends only on temperature. That is what is this statement says. क्या है? Kinetic energy of gas molecules depends only on temperature of the gas. तो since we know प्रेशर का भी हमने डेरिवेशन किया 1/3 NV m V square V bar square. तो NV क्या है? टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम. ठीक है, तो V को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो व्हाट वी गेट इज दिस, ये मिल जाएगा, है ना. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. दिस साइड यू सी केयरफुली, राइट हैंड साइड में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाइड, देयरफॉर वी हैव टू डिवाइड बाय 2 टू बैलेंस इट. तो दिस ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं, इट इज नथिंग बट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. हाफ एम स्क्वायर क्या होता है? हाफ एम स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, एन इज द टोटल पार्टिकल्स, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. यू नो, हाफ एम स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल. एन से मल्टीप्लाई किया तो ऑल सभी की हो जाएगी. तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, इसका सिंबल हमने ई लिखा. E is the average translational kinetic energy of all molecules. Let me write again. It is not properly written. No. E is average translational kinetic energy. Average translational kinetic energy of all the molecules or atom. Translation means straight line motion. It doesn't include the rotational motion. Only straight line particles going like this or going like this. Rotational इसमें involved नहीं है. Only translational, which is due to the straight line motion. ठीक है, तो ये हो गया. But left hand side if we see, since we know अभी left hand side में changes करने हैं हमें, temperature लाना है. Since PV is equal to nRT, which is also equal to NKBT. दोनों इक्वेशन होती है. आइडियल गैस इक्वेशन की राइट साइड में nRT भी हो सकता है, और अगर हमने चेंज किया इसमें
तो इट कैन बी n इंटू के बी इंटू टी। देयरफॉर लेफ्ट साइड में यहां से देखो पी को हम क्या लिखेंगे, n इंटू के बी इंटू टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। देयरफॉर एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज प्योरली टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये देखो सब कांस्टेंट है, देखो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 2/3 इज कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्योरली टेम्परेचर डिपेंडेंट। देयरफॉर एवरेज ट्रांसलेशन प्रूव हो गया, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज directly proportional to temperature, independent of pressure and volume, independent of other things, independent of other things। ना तो प्रेशर पे डिपेंड कर रहे हैं, ना वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे हैं, प्योरली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। ओनली ऑन टेम्परेचर लिखा है हमने ऊपर, ओनली ऑन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। Clear? Anything you want to clarify here? इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस पार्टिकल। एक सिलेंडर में सपोज आपने डिफरेंट डिफरेंट गैस पार्टिकल आपने भर दिए। रूम का एग्जांपल ले सकते हैं, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रूम, इन दैट डिफरेंट इन द रूम डिफरेंट पार्टिकल्स आर देयर, सबकी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम बिकॉज टेम्परेचर इज सेम इन द रूम थ्रू आउट। आर यू गेटिंग दिस? इन योर क्लासरूम और इन योर रूम, वेयर एवर यू आर सिटिंग, all the gas particles, whether it is oxygen or water vapors or CO2 or nitrogen, सबकी translational kinetic energy equal होगी because temperature is same throughout the room. So even it is heavy light particle or heavy particle, all will have same kinetic energy, average translation kinetic energy, independent of type of the gas, independent of pressure, independent of the temperature। इवन if प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंट भी हो गया कोई फर्क नहीं। सेम फॉर ऑल गैसेस, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। है ना? चलो यहाँ पे लेट मी राइट इट, दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। देयरफॉर एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स only on temperature and independent of nature of gas, temperature, pressure, etc. Very important point. Those particularly those who are going for competitive examination has to remember this point. Very extensively asked in competitive examination. This particular point पे बहुत सारे questions बनते हैं. I will just show you 2-3 questions we are going to solve. Yes, anything? Sir, you've written independent of nature of gas and temperature, but it depends only on temperature. The temperature लिख दिया कि हमने, sorry, volume, volume and pressure, etc. Thank you. Independent of nature of gas, let it be any gas particles, let it be volume, let it be pressure, and so on. ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन मिल गया ना ये, यू कैन फाइंड इट ऑल्सो, इधर 3/2 हो जाएगा। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इसको, अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ा तो वी कैन यूज दिस, है ना। If you want to calculate average translation kinetic energy, therefore E is equal to 3/2, 3 ऊपर चला जाएगा, n into kb into t। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। तो
माइंड यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग, ट्रांसलेशन. कभी कभी they write only kinetic energy of all molecules, but which is not correct statement. Kinetic energy में क्या होता है, रोटेशन भी आ जाता है, वाइब्रेशन भी आ जाता है. तो then diatomic will have more energy, you know, at same temperature. Diatomic में रोटेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है. So therefore again and again I am emphasizing it is translation, moving in the straight line only. That energy we are talking about. Okay. So this topic is done, no problem. I think we'll see the example of this particular point. I want to highlight furthermore. देखो, now based on these points, let us write two questions. What is the translation kinetic energy of each molecule or per molecule? है ना? तो ये किसकी थी? टोटल गैस की थी पूरी, ऑल द गैस पार्टिकल की थी. इसको n से डिवाइड कर देंगे तो ईच पार्टिकल की आ जाएगी, है ना? Are you getting? We had done the derivation अभी. Average translation kinetic energy was for all the molecules. उसको टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो सिंगल पार्टिकल की मिल जाएगी, सिंगल मॉलिक्यूल और सिंगल एटम की, है ना? तो जस्ट आई हैव डन इट. आई विल मेक इट बिगर. कैन यू सी? Alright. E upon n for each molecule, for one single molecule, average translation kinetic energy divided by n. अभी हमने किया था ऊपर, n getting cancelled. What we get is 3/2 kBT. Let me write again. So you can find out, if I ask you, find out the average translation kinetic energy of oxygen gas molecule in your room. So you can just measure the temperature of room, or kb is the Boltzmann constant. 1 point कितना है, 1 point. R को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिलता है. तो इट कम्स कितना आया था, 1.38 into 10 to the power minus 23 सॉरी, है ना? तो वेरी लो वैल्यू है ना. और टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर देना, तो मल्टीप्लाई करो तो यू विल फाइंड वेरी लो एनर्जी, 10 to the power minus 22 या 21 के ऑर्डर की जूल्स में, because it is single particle, है ना? Single particle is very tiny particles which cannot be seen even easily with the microscope. Even electron microscope will find difficult to see the molecules, है ना? तो very tiny. So it will have least energy, but this is it will be the energy of all the particles. You can calculate है ना? ऑक्सीजन रूम में ऑक्सीजन पार्टिकल है, उसका भी नाइट्रोजन है, सबका सेम आएगा कि नहीं सेम? बिकॉज ओनली टेम्परेचर मैटर्स, और ये दोनों तो कांस्टेंट है. गॉट इट? Yes, sir. और एक जस्ट हाँ ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. बेस्ड ऑन दिस देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक. शॉर्ट एग्जांपल बट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डन. तो ये क्वेश्चन है, देखिए टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5. सॉल्व एग्जांपल. फ्लास्क कंटेन्स argon
and chlorine in the ratio of 2:1 by the mass. The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. Obtain the ratio of average. देखो यहाँ पे उन्होंने translation word is missing. They should be very careful in writing this because argon and chlorine, this is diatomic. So we should very carefully write it because if you don't write, question will be changed. Average translation. Kinetic energy per molecule. तो क्या आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का? ये डिराइव किया अभी हमने 1/2 3/2 सॉरी केबीटी. टेम्परेचर तो पूरे सिलेंडर का सेम है तो 1:1. So ratio is 1:1 first part. Yes, sir. Second part, root mean square speed VRMS of molecules of two gases. मोलर मास देखो यहाँ से तो VRMS 1 upon VRMS 2 inversely proportional to molar mass है ना. मोलर मास ऑफ वन सीक्वेंस में वन कौन सा आ रहा है आर्गन और सेकेंड वन इज क्लोरीन. सॉरी ये नीचे वन ऊपर 2 आएगा नीचे 1 इनवर्स है ना. यू रिमेंबर फुल फार्मूला 3RT/m0 नीचे 1. तो इसका जो है फर्स्ट वन इज योर आर्गन, उसका मोलर मास कितना है नीचे आएगा उसका 39.9 एंड ये 70.9 है. इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.33 कुछ आ जाता है. दैट यू कैन डू इट कैलकुलेशन पार्ट. ओके तो RMS speed will depend upon the mass or molar mass, whereas average transition kinetic energy is independent of the molar mass. So therefore that is coming to be 1:1 and this is coming to be different. Ratio उनका अलग है. It is other than 1 because both will have different RMS speed. Getting this point? Yes, sir. And this will not make any difference. And ratio of masses are not going to make difference. Because यहाँ पे हमें मोलर मास की जरूरत है, यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं है. टेम्परेचर की जरूरत है only. Molar mass and temperature, that matters. In this case, temperature will get cancelled. Same temperature है. ठीक है. This is very important. So based on the basis of this question itself, they are asking this. For example, suppose if I ask you this question, यहाँ पे देखो they are very correctly asked average translation kinetic energy of O2. What will be the answer of this question? Important. बोलिए क्या आंसर होगा इसका? Are you there? Yes, go. Tell me the answer. Nobody. Yes, Disha. What will be the answer? Okay, let me ask you.
Anybody, one by one. Aishwarya, what is the answer? Quick So 1 reply. minute. And Akansha. Quickly reply. Anirudh. But you have to unmute and reply me. Whether yes or no, I don't know. That also you have to reply quickly. Akansha, can you tell me the answer? Unmute and tell me. It means you are not present in the class. Those who are not responding means not present in the class. Anirudh. Anirudh also absent. Anushka. Yes, sir. What will be the answer of this question? I don't know. Disha. Sir, may Disha. No, just wait. Your number will come. Yes. Disha. Respond quickly, Disha. Do you know the answer of this question? No answer coming means not present in the class. Yanda. Again, no response coming. I don't know what is the problem. Harshada, Yes, sir. क्या आंसर होगा इसका जल्दी से बताइए. Do you know? Harshada, do you know the answer? No, sir. Harshit, do you know the answer? Quickly बोलिए. Harshit, are you there? No response coming again. Ninsia, what is your answer? Yes, sir, it will be the same because as the temperature is the same and average translation kinetic energy only depends on the temperature. Okay, Manushri, what will be the answer, Manushri? Are you there, Manushri? So, yes, sir. So Hmm. actually, I have missed some of the classes because I was not well. So actually, some of the Okay, concepts are not okay. clear. Okay, Sharanya. Sharan, are you there? Again, no response coming. Sheetal, do you know the answer? Yes, sir. क्या होगा? Do you know the answer? Want to reply? Shlok. Sir, maybe C1. Okay, Not Shlok. confirmed. Okay, ठीक. Shlok. Yes. What can be the answer? So C. Okay, Shreya. So 0.04. 0.04 C आंसर है. ओके, अभी हमने देखा, अभी हमने पढ़ा ऊपर, ये तो पढ़ा नहीं है. देखो यहाँ पर सेम होगा. ईच मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 केवीटी है ना. ये तो कांस्टेंट है. टेम्परेचर भी दोनों का सेम दिया कि नहीं? इट विल बी सेम. सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 इज गिवन दिस मच एंड. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने वर्ड एवरेज गायब कर दिया. ठीक है, उतना तो कॉमन सेंस लगा सकते. एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 at same temperature, even if they are in different places, but if they have the same temperature, they will have the equal, because answer होगा same, that is 0.048, that is C option, since E is equal to 3/2 kVT. अगर temperature double हो गया, so what is the effect? Now tell me, the temperature is doubled, what will be the effect?
तो आंसर क्या होगा? डबल or more than double or less than double or anything? If temperature is doubled, बताइए चलो. I am framing it in another way. If temperature doubles, average transition kinetic energy will also double. Is it true or false? What is, So It is- please could you repeat the question? my question is this: if temperature doubles, average transition kinetic energy will be double. नहीं यार दोनों भी एक Mute करो. Whose mic is on? गाड़ी Mute उसके it. पापा ले गए पापा की गाड़ी अरे, what is this? Whole class is Anand, Shlok Anand. Your mic is on. Average, my question was there. Temperature double किया, तो average transition kinetic energy will be double or different? बोलो. ये तो कांस्टेंट है ना भाई, तुम लोग क्यों नहीं समझ पाते क्वेश्चन? ये कांस्टेंट है. टेम्परेचर अगर हमने डबल किया, This will E पर also क्या be इफेक्ट? double. हाँ, provided temperature should be doubled in Kelvin. Yes. केल्विन में डबल होना चाहिए. कभी कभी डिग्री सेल्सियस में है तो उसमें डबल किया तो हम नहीं बोल सकते डबल, क्योंकि केल्विन में अगर डबल कर दिया तो ये भी सेम लीनियर रिलेशन है, तो ये भी डबल हो जाएगा. तो यू शुड बी रिप्लाइंग yes, it will be double provided temperature is in Kelvin. So you have to be careful. Competitive examination, they may give you true and false, है ना? Or even normal अपने आपके examination में भी दे सकते हैं ना. ये this is the very much part of our textbook only. So every answer should be very carefully written. ठीक है? Yes. Sir. Okay, this again similar question is there here also. Combination of 2 points. And अभी हमने ऊपर short example किया था ना. One was for average transition kinetic energy, another was for RMS speed. So ये same question is framed in the competitive examination from same point. Can you do it in the homework? Yes, sir. So this is good question for practice. Today's topic is based on this only. I mean, this question is based on today's topic which we are done. Okay, so shall I close it now? I think time is over. So tomorrow we'll see the what is called degree of freedom and equipartition of energy and mean free path. These 3 topics are remaining. Then our course will be over. That's all from my side today. Anything you want to ask?